Hello class 10th. Today we are going to start your biology topic, life processes. So let's start by the introduction. Let's start with the basic question. What are living organisms? What are living beings? We can say that living beings are those organisms which show all the characteristics of life. हम कह सकते हैं living beings वो organism हैं जो life के हर characteristics show करते हैं. And what are the characteristics of life? Growth, movement, breathing, respiration, etc. Reproduction. जो ये सारे characteristics show करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक living being, एक living organism. Living organisms are made up of a number of cells. We have already discussed that living organisms are made up of a number of cells, and cells are tissues. A number of tissues form an organ. Different organs form a organ system, and different organ systems form a organism. So living organisms are made up of a number of cells. एक living organism एक number of cells से बना होता है. एक नंबर ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू. फिर नंबर ऑफ टिश्यूज क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन. नंबर ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम. और एक नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, cells make tissues, tissues make organs, organs make organ system, then organ systems make an organism. The name of our chapter is life processes. So what are life processes? Life processes are the maintenance functions which take place even when the organism are in rest to keep the living organism alive. लिविंग लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी के प्रोसेसेस हैं, जो हमेशा चलते रहते हैं हमारी बॉडी में. इवन व्हेन वी रेस्ट, व्हेन वी आर इन स्लीप और व्हेन वी रेस्ट, जो प्रोसेस हमेशा चलते रहते हैं इन ऑर्डर टू कीप अस अलाइव आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. ये सारे क्या हैं? हमारे बेसिक रेस्पिरेशन है, एंड वी विल स्टडी अबाउट देम वन बाय वन. न्यूट्रिशन. सो फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी को अपने अंदर लेना, टू इनटेक द सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड हाउ वी इनटेक एनर्जी? इन द फॉर्म ऑफ फूड. दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कैसे लेता है? इन द फॉर्म ऑफ फूड. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज डिफरेंट organisms is fulfilled in different ways. Nutrition in different organisms is fulfilled in different ways. Every organism has its own way of intaking food, intaking energy. Some organisms use simple food material in the form of carbon dioxide. There are some organisms which use simple food material, like they use the raw materials. जैसे कि हमारे they directly use carbon dioxide, water to make their food. And the other ones use complex food जो पहले उनकी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, then it provides energy. Enzymes. What are enzymes? We all are familiar with the word catalyst in chemistry. We have already learned about it. We have already heard about it. What a catalyst is? Catalyst is a substance, is the material which is used to enhance the reaction, to speed the reaction or to slow down the reaction. It is catalyst. And what are enzymes? Enzymes are actually biocatalysts which are used to break the food, for the breaking of food. The method of obtaining food is different in different organisms. ये हमने पढ़ लिया. जो मेथड है इन टेकिंग ऑफ फूड का, न्यूट्रिशन का, वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है. सो वी हैव टू मोड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, and other is heterotropic nutrition. So what is autotropic nutrition? Autotropic nutrition is that type of nutrition in which the organisms
prepare their own food. They use simple raw material to prepare their food. अब हम कहेंगे हम humans we cook our food, हम अपना खाना बनाते हैं, पकाते हैं. That is not autotropic. We don't use raw materials. जो हम सब्जी use करते हैं, we use fruits or anything. They are not raw material. What raw materials are? They are carbon dioxide, the minerals from the soil, sunlight, extra. They are raw materials. So कौन raw material use करके food बनाते हैं? Are plants. What plants use? They use directly the sunlight. They use the carbon dioxide from air. They use the minerals from the soil to prepare their food. So plants कौन से mode of nutrition का use करते हैं? Autotropic nutrition. And what was the other one? Heterotropic nutrition, in which the organism depend on others for their food. We can't make our own food. अगर हम plants को ना खाएं, अगर हम vegetables ना खाएं, हम sunlight से या carbon dioxide या oxygen लेके या soil से nutrients लेके हम अपना food prepare नहीं कर सकते, हम उससे energy नहीं बना सकते. So we are dependent on plants for our food. So we are heterotropic organisms, and the mode of nutrition that we are using is heterotropic nutrition. So that was just the intro part. एक होता है autotropic, एक होता है heterotropic. Then heterotropic again we have a number of different subdivisions. We will study about them. So what we have learned today, हमने देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो लाइफ प्रोसेस शो करे, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन. देन हमने देखा लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं. लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी में हमेशा चलते रहते हैं, इवन व्हेन वी आर इन स्लीप और वी आर इन रेस्ट. देन हमने देखे लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन. दे ऑल आर सम बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. देन हमने देखा न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन, it is the intake of energy in the form of food. So guys, that was just the intro part. We will cover everything in this topic, and in the next lecture we will study about the basic subdivisions of autotropic nutrition and heterotropic nutrition. Thank you.